So, Assalamu Alaikum. Today we'll learn flowers and ribbons Arabic Mehndi design. So, first we'll start with drawing a simple flower at the center of the palm. Make small petals of the flowers. You can border it if you want. Okay, then you can add leaves on it. It's looking like a lotus now. See, I am adding a leaf, then adding more petals. Okay, then I'm adding one more flower just below it. I'm putting dots below it. Again, I'm drawing another flower at the side of the hand, a hibiscus flower. Then again a flower at the top of it. Then we'll connect all these flowers with thin lines and with dot lines. See, as you can see in the video. Now the flowers are connected. Now we'll make more leaves. Okay, now we can make leaves wherever we need. Okay, now we'll go to the little finger and take an outline for our understanding. Then we'll make a line, a zigzag line over it. Okay, like a ribbon, flowing it, connecting to the flowers. See, like this. Okay. See, it's looking like a ribbon now. Same we'll do with the index finger. Take a zigzag line and again double it. It should look like a ribbon and connect with the flowers. Now you can shade the flowers. Start shading it. Okay, lightly. Shade all the petals of the flowers, even the center. इससे flowers और उठ के आएगा. Okay. Don't shade the leaves, only the petals of the flowers. Shade all the petals, all the flowers. Okay. And leaves को आप dark कर सकते हो by filling. Okay, like this. अब सारे फ्लावर्स को ऐसे ही शेड करना है, सेंटर में भी करना है, ऑल द पेटल्स ऑल्सो, एंड लीव्स को फिल कर देना है पूरी तरह से. Okay, after the shading is complete, now you can move to the next step. फिल द रिबन्स. ऐसे ही हल्की शेडिंग करते हुए, पूरी तरह से फिल नहीं करना है उसे, हल्की हल्की शेडिंग करना है.
ऐसे ही हल्की हल्की शेडिंग करना है, ओके, ताकि वो रिबन नज़र आए। तो सिर्फ बीच बीच में ही करना है, पूरे रिबन को भी नहीं करना है, ओके। देन नाउ आप अपने फ्लावर्स को बॉर्डर करो, डार्क करो, ताकि वो और उठ कर आए। फ्लावर्स को, लीव्स को, all the elements that you have added. रिबन्स को भी आप डार्क कर सकते हैं इस तरह से। एक और रिबन आप बना सकते हैं ऑन द थंब, सेम वे में जैसे हमने इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर पे बनाया था। एंड उसे भी हम ऐसे ही शेड करेंगे एंड कहीं कहीं हमको जहाँ लगता है वहाँ डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी डिज़ाइन हो गई कंप्लीट और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है।